हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूपीएस कैसे प्रिपेयर और लिखा जाता है। Prior to start this subject, we should know what is WPS and what is PQR. So WPS and PQR क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। So now we'll check what is WPS. So क्या लिखा है, what is WPS is a written document that provides direction to the welder or welding operator for making production welds in accordance with code requirements. The completed WPS shall describe all the essential, non-essential, and when required supplementary essential variable for each welding process used in this WPS. So this is the WPS meaning. So I will explain now in Hindi what is actually meaning in WPS. सो WPS क्या है? सो WPS एक रिटन डॉक्यूमेंट है और एक डायरेक्शन देता है वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर को टू मेक ए प्रोडक्शन वेल्ड। सिंपली हम बोल सकता है साइड में जो वेल्डिंग होता है, सो वो वेल्डिंग का जो वेल्डर है वो वेल्डर को प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए एज पर WPS। दे मेंटेन द वेरिएबल और नॉट like variable parameter, current, voltage, they are following that WPS or not। एक completed WPS में तीन चीज होता है, एक है essential variable, एक है non essential variable एंड एक है supplementary essential variable। और वो essential और वो variable के अंदर में बहुत सारा parameters है, so that parameter should follow by the welder। So you understand the what is the meaning of WPS, that is called the welding procedure specification। Now we'll go the what is PQR, procedure qualification record। PQR is a record of the weld data used to weld a test coupon. It also contains the test result of the tested specimen। The completed PQR shall document all the essential and required supplementary essential variable for each welding process used during the welding of test coupon। Non-essential variables used during the welding of the coupon may be recorded। So what is PQR? So क्या करता है, PQR is a record of old data। PQR क्या करता है, old data को रिकॉर्ड करता है एंड जो वेरिएबल लाइक करेंट, वोल्टेज वो है पैरामीटर दैट ओल्ड डाटा। ऑल्सो जब वेल्डर टेस्ट कूपन को वेल्डिंग करते हैं और क्या करता है, वेल्डिंग का बाद जो टेस्ट स्पेसिमेन बनता है वो टेस्ट स्पेसिमेन का बनने का बाद जो टेस्ट रिजल्ट होता है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो कंक्लूजन इज जो वेल्डर का वेरिएबल है वो पैरामीटर्स प्लस टेस्ट स्पेसिमेन का जो पैरामीटर है, रिजल्ट का जो पैरामीटर्स है, जो रिकॉर्ड्स है, वो आपको PQR में इंक्लूड करना पड़ता है। सो PQR में भी तीन चीज इंक्लूड करना पड़ता है, एक है एसेंशियल वेरिएबल, एक है नॉन एसेंशियल वेरिएबल एंड एक है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल। तो PQR में भी तीन चीज इंक्लूड करना पड़ता है, एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल एंड द supplementary essential variable। So you understand what is WPS and what is PQR। Now we will go the next page। So the very important part, this one, 5 step process to qualify a WPS। तो एक WPS को क्वालिफाई करने के लिए 5 प्रोसेस और स्टेप मालूम होना चाहिए। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द इंटेंडेड एप्लीकेशन फॉर व्हिच द WPS विल बी यूज्ड। आप कौन सा एप्लीकेशन में यूज करोगे WPS, मींस oil and gas में or any steel structure or any, because the every application का different specification है, different drawing है। So as per this you have to prepare the WPS। So you should know very well the what will be the application, intended application। After application you know where it will be used, then you have to prepare the developer draft procedure। draft procedure आपको एक बनाना है। ड्राफ्ट प्रोसीड्यूर क्या है, वही होता है PWPS, प्री क्वालिफाइड WPS बोलता है उसको ड्राफ्ट प्रोसीड्यूर। ड्राफ्ट प्रोसीड्यूर हो गया, देन मेक ए क्वालिफिकेशन ऑयल। मेक ए क्वालिफिकेशन ऑयल मींस द PQR। आपको PQR करना है, प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। आप PWPS कर लिया, उसके बाद आपको PQR करना है। आप PQR टेस्ट द क्वालिफिकेशन ऑयल, द फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ स्टेप इज टेस्ट द क्वालिफिकेशन ऑयल। सो आपको वेल्ड को क्वालिफिकेशन जो जो रिक्वायरमेंट है एज पर एसमी सेक्शन 9 का हिसाब से आपको टेस्ट करना है।
आप वो टेस्ट होने का बाद आप टेस्ट रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल, देन you have to write the final WPS. So you understand the 5 steps. First, understand the intent and application, then develop a draft procedure, then make a qualification oil that is called PQR, then test the qualification oil, then write up the final WPS. Definitely you understand now. First is the PQR. First is the PQR, then is the final WPS. You can understand here. Step number 2 is the pre-qualified WPS. This is the pre-qualified WPS, this one. And step number 3 is make a qualification oil. This is PQR. So you understand the between WPS and PQR. Definitely the final WPS is the after of PQR. So PQR have first. So this is the 5 step you should know very well for qualifying a WPS. Now WPS में बहुत सारे पैरामीटर होता है जो वेल्डर को फॉलो करना है, मस्ट फॉलो करना है, यू कैन से. देन हम लोग एक क्या होता है, साउंड वेल्डिंग, अच्छे वेल्डिंग, क्वालिटी वेल्डिंग निकल सकता है उसमें से. बट अब वेल्डर फॉलो नहीं कर रहा है आपका वेरिएबल, डेफिनेटली यू कैन नॉट गेट द करेक्ट और साउंड वेल्डिंग. सो डब्ल्यूपीएस में जो पैरामीटर है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का कितना टाइप है, 3 टाइप्स है. एक है एसेंशियल वेरिएबल, एक है नॉन एसेंशियल वेरिएबल एंड एक है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल. So these 3 variables are very important to prepare the WPS. So 3 WPS you understand here, the essential, supplementary essential and non-essential. So what is essential variable? Essential variable are those in which the change as described in the specific variable is considered to affect the mechanical property of the weldment and shall require requalification of the WPS. So I will discuss in next page where you can find out the essential variable, non-essential variable and supplementary essential variable in ASME section 9. So essential variable क्या है? Essential variable वो है जो आप essential variable का कोई भी पैरामीटर आप चेंज करोगे तो आपको रिक्वालिफिकेशन करना पड़ेगा WPS को. मीन्स essential variable चेंज होता है तो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. That's why we need requalification of the WPS. Simply we can say आप essential variable चेंज करोगे तो आपको रिक्वालिफिकेशन करना पड़ेगा WPS को. नॉन एसेंशियल वेरिएबल क्या है? नॉन एसेंशियल वेरिएबल आर दोस इन व्हिच changes as described in the specific variable may be made in the WPS without requalification. Means आप नॉन एसेंशियल वेरिएबल आप चेक कर सकते हो आप एसमी सेक्शन में 9 में, जहां पे आपको चेंज करने से, नॉन एसेंशियल वेरिएबल चेंज करने से आपको डब्ल्यूपीएस को रिक्वालिफिकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है. मींस नॉन एसेंशियल वेरिएबल को आपको चेंज करने से कोई डब्ल्यूपीएस को रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है. एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल, that is are required for materials for which other sections specify not toughness test and are in addition to the essential variable for each welding process. Simply we can say so supplementary essential variable क्या है? Supplementary essential variable change होता है तो आपको not toughness test भी change होता है. So this is called the supplementary essential variable. So you understand now essential variable, non-essential variable and supplementary essential variable. Now we'll go that page in ASME section 9 where it is written in which process, in every welding have which process is there, which QW is there and which QW, what is written in ASME section 9. So let's start. So आप जो important है वो हमको क्या करना है, चेक करना है essential variable, supplementary essential variable and the non essential variable कहाँ पे मिलेगा in ASME section 9. आपको ढूंढना कैसे है, आपको जाना पड़ेगा QW253, QW254, QW255, just I am giving example 256. So 253, 254, 255, what is this? 253 is for SMAW process. This is 254 SAW, 255 is GMAW and the 256 is GTAW. So QW आप 253 में जाओगे तो आपको 3 वेरिएबल के बारे में मिलेगा.
254 में भी 3 वेरिएबल्स का मिलेगा, जैसे एसेंशियल वेरिएबल है, सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल है, नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। 3 वेरिएबल का डिटेल्स आपको ये प्रोसेस में जाएगा तो आपको मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया आपको कहाँ पे जाना है, क्यू कहाँ पे जाना है, तो आपको डिटेल्स ऑफ वेरिएबल्स मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ASME सेक्शन 9 जाना है, उसमें चेक करना है क्यू प्रोसेस के लिए क्या क्या है, आपको एसेंशियल वेरिएबल्स रिक्वायरमेंट है और नॉन एसेंशियल और द सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल। तो आपको क्या है, QW253 में एक टेबल मिलेगा, वो टेबल में आपको डिटेल्स में आपको दिया दिया रहेगा। सो we'll go now table now, what is mentioned in this table. So I am choosing QW255, so हम 255 GN और G में W हम लोग चूज कर रहे हैं। आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, डिटेल्स आर देयर इन ASME section 9, what are the variables are required. So we'll go now QW255 table में हम लोग जाएंगे QW255 का। So this table is very important, that is QW255. This table is for WPS for gas metal arc welding, GMAW and FCAW. So these two process, all variables are including here. So you have to go this table for anything regarding the GMAW and FCAW process for gas metal arc welding, GMAW. Now we understand the paragraph. What is this? First is paragraph, then brief of variables, then essential, then supplementary essential, then non-essential. So QW402, what is this? For joint. So in joint, how we have to check here? Check कैसे करना है आपको, QW402.1, QW402.4, QW402.10, QW402.11 ऐसे पढ़ा जाता है। So QW402.1 is for group design. So this meanings is changes. 5 means changes of group design. आप चेंज करोगे तो ग्रुप डिजाइन को, आपको नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, मीन्स ये नॉन एसेंशियल वेरिएबल है आपके लिए। सो नॉन एसेंशियल वेरिएबल इन आप ग्रुप डिजाइन चेंज करोगे तो आपको WPS रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। सो अंडरस्टैंड पॉइंट 4, QW402.4, दैट इज सब्सट्रैक्शन बेकिंग, मींस बेकिंग को आप सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको भी नॉन एसेंशियल वेरिएबल आपको रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। QW402.10, दैट इज कॉल्ड आल्सो द रूट स्पेसिंग। आप रूट स्पेसिंग हटाया और ऐड किया तो उसमें क्या होगा भी, आपको नॉन एसेंशियल वेरिएबल वो भी आपको चेंज करने से आपको रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। एंड द रिटेनर्स का ऐड करने के लिए ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी 402.11 में है, वो भी नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। सो ये चार चीजें आपको चेंज करने से आपको कोई वेल्डिंग WPS रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत नहीं, ये है नॉन एसेंशियल। नाउ यू विल गो group number, you can say 403.5, that is called the, if change in group number, this is called the supplementary essential variable. Definitely आप ग्रुप नंबर चेंज हो गया तो आपका WPS में चेंज करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली एक एसेंशियल वेरिएबल में गिना जाता है, सप्लीमेंटेड एसेंशियल में। तो आपको ओल्डर को WPS को रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत है, आपको WPS का फिर से क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। टी लिमिट्स आपको है सप्लीमेंटेरी एसेंशियल वेरिएबल्स, मीन इसको चेंज करने से हमको WPS दोबारा करना पड़ेगा। सो यू अंडरस्टैंड द टेबल QW40240, तो कैसे कैसे आपको रीडिंग करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। सो दिस इज 404.4, 404.5, 404.6, 404.12, 404.23. So this is the way how to read it, this table. Now we will go, the first variable is QW402, that is called joints. तो 402 में क्या है, joints है। So joints का डिटेल्स हमको कहाँ से मिलेंगे, QW402 joints, आपको joints है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, joints को चेक करने के लिए। joints को चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन और G drawing. So you can get the details from specification and drawing.
द डिटेल्स ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट का डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगा? स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग से मिलेगा। सो आपको ड्राइंग में आपको मे बी हो सकता है वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट, मे बी सिंगल भी, यू कैन सी देयर दिस टाइप ऑफ जॉइंट मे बी रिक्वायरमेंट। If drawing is required, this joint definitely we have to make this type, this joint WPS, maybe in double V. So you can also make this type of WPS. So you understand the QW402 is joints. Now QW403. This is very important part. All are important. The base metals. तो QW403 में क्या है? बेस मेटल्स है। सो बेस मेटल को हमको कहाँ से मिलेगा? बेस मेटल का डिटेल्स। तो बेस मेटल को आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 2 स्टैंडर्ड फॉलो करना है। कौन सा स्टैंडर्ड? वन इज एसमी सेक्शन 2 पार्ट ए, another is you can say ASME section 9 QW 422 table. So you can find the details of base metals where QW 422 table in ASME section 9 and ASME section 2 part A. So this is very important. So from where, कहाँ से हमको details of base metal मिलेगा? एक section 9 से और इस ASME section 2 part A से मिलेगा। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बेस मेटल को सिलेक्शन कर सकते हैं। सो हम अभी जाएंगे QW 422 टेबल। So QW 422 table, just I'm making here on table in the next page. You see here the table QW 422, you can get the details of base metal. Just I choose one material specification, that is SA106. So you see here the this material, this is the metal specification. So what is there in this QW 422? You have to check first. This is the specification number. This is type and grade A, B or C. UNS number is there in each material, each specification. Minimum specified tensile strength, how much? This one. P number for welding, P number for brazing, ISO 15608 group, nominal composition, type and product from. Now we'll explain. SA106, there is 3 grade, A, B and C. Now maybe you choose SA106 grade C, then what will be the your tensile strength? 70 MPa, 70 KSI, sorry, 485 MPa. What will be the P number? P number will be 1, group number will be 2, and you can see this for brazing, this is not required. Nominal composition, carbon, manganese, silicon is the main composition. Other composition also is there, but main composition is carbon, manganese, silicon. And typical product from, so pipe, seamless pipe. So seamless पाइप है इसका टिपिकल प्रोडक्ट। तो टिपिकल प्रोडक्ट 106 से आपका पाइप बन सकता है। सो आपको चेक करना है, डेफिनेटली A106 सब ले रहे हैं तो प्रोडक्ट फ्रॉम क्या है? प्रोडक्ट फ्रॉम है पाइप। आपको पाइप का WPS के लिए A यूज करना है। सो यू अंडरस्टैंड हियर, आपको समझ में आ गया होगा ऐसे 106 का डिटेल्स हम लोग कैसे इधर से हम देख सकते हैं। तो मेटेरियल जब फाइनलाइज हो जाता है तब क्या होता है? ये आपका मेटेरियल फाइनलाइज हो गया, आप SA106 आपको जाना कहाँ पड़ेगा? फाइनलाइज होने के बाद आपको डिटेल्स में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा एसमी सेक्शन 2 पार्ट ए। आप पार्ट ए में जाके आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करना है आपको केमिकल एंड chemical analysis and mechanical properties। तो आपको चेक करना पड़ेगा एसमी सेक्शन 2 पार्ट ए में जाके केमिकल एनालिसिस एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो यू अंडरस्टैंड दिस QW 422 टेबल। सो नाउ वी फिनिश द QW 403 402, you understand? 403 the base metal, you understand? So another thing is very important, that is P number. So in base metal have different P number, each base metal have different P number. So we'll check which base metal have the which P number. So base metal, if you go first is steel
and steel alloy. What will be the P number? P number 1 to P number 15F. Then second is aluminium and aluminium base alloy. The P number is, you can say 21 to 26. This is the P number for aluminium alloy. Copper and copper base alloy. That is P number is 31 to 35 P number. Fourth is nickel and nickel base alloy. The P number is 41 to 49. Fifth is titanium and titanium alloy. The P number is 51 to 53. Sixth is zirconium and zirconium base alloy. So this is P number is 61 and 62. So you understand the base metal or P number. This is very important to make the WPS. If you are making in steel and steel alloy, definitely we are vast using. हम लोग जो यूज करते हैं साइड में सबसे ज्यादा स्टील यूज होता है. So स्टील का जो P number is P number 1 to P number 15. You can see in the details P number in ASME section 9. So every material have their different P number. This is very important in ASME section 9. The P number you have to remember which material, which base metal, which P number is there. Now we will go the next one is very important, that is called the filler metal QW404. So the now next important part is QW404 filler metal. QW404 filler metal related जो वेरिएबल है वो कहाँ से देखता है? फिलर मेटल के लिए हमको जाना है दोनों स्टैंडर्ड का पास जाना है, देखना है एसमी सेक्शन 9 QW432 and another one is QW442. These two QW you have to check in ASME section 9 filler metal के लिए. Another one you have to check ASME section 2 part C. So ये दोनों चीज आपको चेक करना है फिलर मेटल के लिए. एक है ASME सेक्शन 9 है और एक है ASME सेक्शन 2 पार्ट सी. सो ASME सेक्शन 9 में QW432 क्या है? Q432 में एफ नंबर का डिटेल्स दिया हुआ है. सो आप QW432 हम एक टेबल में जो दिया हुआ है उसको डिटेल्स हम लोग लिखेंगे. इधर चार चीज दिया हुआ है QW432 में. वन इज एफ नंबर, अनदर इज ASME स्पेसिफिकेशन नंबर, AWS क्लास एंड यूएस नंबर. बट हम WPS में लिखना पड़ता है ये तीनों चीज, एफ नंबर, ASME स्पेसिफिकेशन एंड AWS क्लास. यूएनएस नंबर पर स्टील में हम लोग लिखता नहीं है, नहीं देते, यूएनएस नंबर नहीं दिया रहेगा. सो QW432 डिटेल्स में ए लिखना पड़ता है WPS में, एफ नंबर, ASME स्पेसिफिकेशन, AWS क्लास. नाउ फॉर एग्जांपल you have choose already base metal, what base metal, that is 106, SA106. So in SA106 you choose the filler metal is ER70SG for GMAW welding. So where, how you have to find out this SA106 material, that filler metal ER70SG? Where you have to go? You have to go directly QW432 में आपको जाना है. आपको एफ नंबर 6 आपको जाना है कैसे? SFA 5.18, SFA 5.18. So आपको जाना है स्पेसिफिक फिलर एनालिसिस 5.18. that is AWS classification. It is written there that
all classification. So all classification. So you have choose this AWS class ER70SG. That is comes under the middleware. So you choose this ER70SG. So you check that which SAP it comes under. आपको आप चूज किया है ER70SG. सो आपका स्पेसिफिक फिलर एनालिसिस क्या है 5.18. तो आपका एफ नंबर हो जाएगा 6. तो आपको ऐसे ही चेक करना है. यूएनएस नंबर स्टील का स्टील नॉट रिक्वायर्ड. यू अंडरस्टैंड द QW432 में क्या दिया रहता है और एफ नंबर कैसे निकालना पड़ता है. So QW432 understand. Now QW442. So QW442 में क्या है. QW442 में जो ए नंबर है एनालिसिस. सो नाउ इज QW442. QW442 में क्या है. QW442 इलेक्ट्रोड का मैकेनिकल एंड केमिकल जो एनालिसिस है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एनालिसिस चेक करने के लिए एसमी सेक्शन 2 पार्ट सी जाना है. सो पहले आपको चेक करना पड़ेगा QW442. सो वो ए नंबर होता है. ए नंबर दैट इज कॉल्ड एनालिसिस नंबर. सो QW442 है एनालिसिस नंबर. अभी क्या एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस का डिटेल्स में आपको जाना है तो आपको डेफिनेटली एसमी सेक्शन 2 पार्ट सी. एसमी सेक्शन 2 पार्ट सी जाना है. आप एसमी सेक्शन 2 पार्ट सी में जाके आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन चेक करना है. तो आपको समझ में आ गया होगा. QW40 फिलर मेटल में एसमी सेक्शन 9 यूज होता है एंड एसमी सेक्शन 2 पार्ट सी, ये दोनों स्टैंडर्ड यूज होता है. QW432 में एफ नंबर का डिटेल्स दिया हुआ है. एफ नंबर कैसे निकालना है आपका AWS में क्लास में जाके आपका जो फिलर मेटल है उसका हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा आपका एफ नंबर क्या है. ये हो गया. यूएनएस नंबर का जोड़ी नहीं है. And now is 442. What is 442? 442 is the A number. And A number means the analysis number. And QW442 is the A number means analysis number. Analysis details कहाँ से मिलेंगे. एसमी सेक्शन 2 पार्ट सी में जाके आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एनालिसिस का डिटेल्स हमको मिलेंगे. सो ये है QW404. नाउ विल गो द नेक्स्ट वन. So minded for base metal, you have to go section 2 part A, and for filler metal you have to check that section 2 part C. So don't confuse this one. Now next is very important, that is QW405 position. तो QW405 क्या है. पोजीशन है. So पोजीशन में देखना है आपको कौन सा चीज आपको वेल्डिंग करना है. प्लेट और पाइप. आपको प्लेट में वेल्डिंग करना है और पाइप में वेल्डिंग करना है. दोनों चीज आपको देखना पड़ेगा. प्लेट में क्या है और पाइप में क्या है. सो आप जब प्लेट में जाओगे सो यू हैव टू चेक QW461.3 एंड QW461.5. QW461.3 क्या है. इसको ग्रूव वेल्डिंग and this is fillet welding. Now QW461.3 में प्लेट का पोजीशन क्या है. 1G 2G 3G एंड 4G तक हम प्लेट का वेल्डिंग कर सकते हैं. 405 पोजीशन में मीन्स आपका प्लेट में QW461.3 में डिटेल्स दिया हुआ है 1G 2G 3G एंड 4G का बारे में. और QW461.5 में fillet weld. So why it is choose different. Groove is different, fillet is different, that's why. So fillet welding के लिए हमको क्या करना है. QW461.5 में जाना है. 1F 2F 3F 4F, ये चारों पोजीशन के लिए हमको जाना है 460 QW461.5. सो प्लेट
हो गया। अभी पाइप के लिए हमको कौन सा क्यू डब्ल्यू जाना है? आपको क्यू डब्ल्यू जाना है 461.4 एंड क्यू डब्ल्यू 461.6। 461.4 क्या है एंड 461.6 क्या है? 461.4 है सेम groove weld and this is called fillet weld. So fillet weld के लिए डिफरेंट पोजीशन एंड groove weld के लिए डिफरेंट पोजीशन है। So QW 461.4 के लिए आपको groove है, जो पाइप में groove है उसका वेल्डिंग के लिए आपको 1G 2G 5G एंड 6G इसका डिटेल्स आपको देख सकता है QW 461.4 में। एंड QW 461.6 फिलेट वेल्ड जो है पाइप का वो है 1F 2F 2FR 4F 5F 1 2 3 4 5। ये 5 पोजीशन का डिटेल्स के लिए आपको जाना पड़ेगा QW 461.6। सो ये है QW 405 पोजीशन में दो है, वन इज प्लेट अनदर इज द पाइप। सो यू अंडरस्टैंड नाउ पोजीशन। अभी हम QW 405 हो गया पोजीशन। नाउ हम लोग जाएंगे द नेक्स्ट वन is also very important, that is called preheat. Preheat temperature. So QW 406 the preheat temperature. So WPM में हमको preheat temperature मेजर करना पड़ता है। सो प्रीहीट टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमको जो चीज फॉलो करना है तो उसका डिटेल्स हम लोग लिखेंगे। अभी QW 46 प्रीहीट टेम्परेचर कहाँ पे आपको देखना है? एसमी सेक्शन 8 नॉन मैंडेटरी अपेंडिक्स आर में आपको चेक करना पड़ेगा एसमी सेक्शन 8 का। देन यू हैव टू चेक B31.3 टेबल नंबर 330.1.1. See here the 331 point, so I will explain this one. So B31.3 is called the process piping. So this is called the process piping, and B31.1 that is called power piping. Different specification is there. So if you go B31.3, then you have to check table 330.1.1 for details of preheat requirement, and if you choose the B31.1 that power piping, then you have to go this table 131.4.1. so this table you have to go, and you can check the details of the preheat requirement. So you understand QW 406 preheat requirement, where you have to go for details of preheat. So these three standard you need to go. So now we will discuss table 331.1 the preheat temperature. So preheat temperature table 330.1.1. What is there? The base metal group, greater material thickness. I will explain to you this one. Additional limits, required minimum interface temperature, minimum preheat temperature. So base metal P number is 1, base metal group is carbon steel. Okay, what is greater material thickness? Greater material thickness उसका मीनिंग है आपका जो वेल्डिंग का प्लेट का जो थिकनेस है आप इक्वल है, then no problem, you have to choose any of one the preheat temperature measuring. But if you found, आप देख रहे हैं एक दोनों मटेरियल का थिकनेस में चेंजेस है, so always we have to consider like it is 40 mm or 60 mm, so always we have to consider this 60 mm.
So greater material thickness, always we have to choose this 60 mm. The preheat we have to check in 60 mm thickness. 60 mm thickness में आपको preheat check करना है. So greater material thickness. So क्या मेंशन किया हुआ है इधर में, लेस देन और इक्वल टू 25 mm है आपका कार्बन स्टील का थिकनेस. सो एडिशनल लिमिट इज परसेंटेज कार्बन परसेंटेज, it should be 0.30, more than 0.30. So required minimum temperature, minimum preheat temperature is 10, and Fahrenheit if you go then 50 degree Fahrenheit. You understand this one? Less than and equal to 25. If it is carbon steel, the base metal, if it is less than 25 or equal to 25, then minimum preheat required is 10 degree only. If it is more than 25 mm and percentage of carbon is less than or equal to 0.30, then also the minimum preheat temperature is 10 degree. It is more than 25 but percentage of carbon, if it is more than 0.30 per 0.30 the percentage of carbon, तब 95 डिग्री सेंटीग्रेड जरूरत है मिनिमम प्रीहीट टेम्परेचर. सो यू अंडरस्टैंड द प्रीहीट टेम्परेचर कैसे दिखा जाता है. नाउ विल गो द नेक्स्ट वन, QW407. सो QW407 क्या है? QW407 is PWHT, that is called the post oil heat treatment. So post oil heat treatment के लिए आपको जाना कहाँ है, आपको कहाँ पे चेक करना है? So you have to check ASME section 8 division 1, that is UCS 56. If you go there, you can see the details of PWHT. Also, you can check in B31.3, the table 331.1.1. And another, if you go the power piping 31.1, the table is 132. So each standard have the different requirement. So if you go the ASME section 8, आप जब ASME section 8 में जाओगे आपको UCS 56 में आपका रिक्वायरमेंट है. B31.3 टेबल में 331.1.1 में जाओगे तो आपका PWHT आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपको आप मालूम पड़ जाएगा. B31.1 टेबल 132 में जाओगे तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगा. सो आपको इधर में एक टेबल है 331.1, वो जो पोस्ट ओयल हीट ट्रीटमेंट उसका बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे. सो पोस्ट ओयल हीट ट्रीटमेंट जो है आप टेबल 331.1.1 मींस द B31.3. सो P number 1 and group number 1 to 3. So P number, which P number and which group number we can do the post oil heat treatment. So P number 1 and group number 1 to 3. So this is the first one. So P number 1 material and the group number it is coming 1 to 3. होल्डिंग टेम्परेचर कितना है? 595 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड होल्डिंग टेम्परेचर है. दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टेम्परेचर. मिनिमम होल्डिंग टाइम एट टेम्परेचर फॉर कंट्रोल थिकनेस. मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना रखना पड़ेगा? सो 50 mm थिकनेस तक आपको 1 आवर पार्ट 25 mm थिकनेस में होल्डिंग टाइम रखना है. आपको पार्ट 25 mm में 1 आवर होल्डिंग टाइम रखना है. आपको समझ में आ गया? पर आवर में 25 mm, पार्ट 25 mm में 1 आवर आपका होल्डिंग टाइम रखना है. सेम ओवर 50 mm में 2 hours plus 15 minutes for additional 25 mm. So additional again 25 mm में आपका होल्डिंग टाइम रखना है 2 hours plus 15 minutes. So in PWHT I will make one video, then I will explain this one, that what is this, how it is holding time is calculated. So you understand now the basic things you should know, the what is mentioned in PWHT, from where you have to get all this information. So P number and group number, P number is 1, group number 1 to 3, होल्डिंग टेम्परेचर इज दिस वन, एंड मिनिमम होल्डिंग कितना रखना है, कितना थिकनेस में कितना आवर आपका होल्डिंग टाइम रखना है, वो डिटेल्स इधर दिया हुआ है.
सो आपको QW407 PWHT आपको समझ में आ गया हो। नाउ QW408 क्या है? गैस। सो गैस का डिटेल्स आपको कहां मिलेगा? एस्मी सेक्शन 2 पार्ट सी में आपको एसएफए 5.3.2 तो जो एसएफए है इसमें आपको डिटेल्स मिलेगा एस्मी सेक्शन 2 पार्ट सी में। तो एस्मी सेक्शन 2 पार्ट सी एसएफए 5.32 में आपका डिटेल्स ऑफ सील्डिंग गैस, आपका सील्डिंग गैस जैसे आपको जीएमएडब्ल्यू में टी की होल्डिंग में आपको में भी आर्गोन लग सकता है, आपको हीलियम लग सकता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है, तो उसका जो डिटेल्स है हमको एसएफए 5.32 में सब कुछ मिलेगा। अब सी हियर द टेबल 1 एसएफए 5.32 आर्गन AWS classification, product state, gas or liquid. So those two form is there, one is gas, another is liquid. You see the purity, all these things you have to mention in your WPS, that gas or liquid, what is the purity, maximum moisture, what is the maximum moisture, 10.5. So minimum things you have to write in your WPS as per the variables. Means what main thing is variable, whatever in variable is there, maybe in QW255 you see some variable is there, essential, supplementary and the non-essential. So you have to put all the essential and supplementary and non-essential, whatever is required is have to mention, whatever is not required so just mention the a not applicable in your WPS. So understand the QW402 408 is gas. Now the two only balance QW409, another is QW410. QW409 क्या है? वो है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? जो करंट है, वोल्टेज, पोलैरिटी, तो वो चेक करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? करंट है, वोल्टेज है, पोलैरिटी है, वो डालना पड़ता है सब आपका QW409 में। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक आपको कहां से मिलेगा? करंट, वोल्टेज, डेफिनेटली you can find out all this one from the PQR record. You can find all these things from the PQR record. So QW409. Now the last one is the QW410, that is called the technique. So which technique you have to follow? In technique so many things are there, you have to check whatever in variables, essential variable, non-essential variable or supplementary variable is there in, if you find in QW410 you have to include that one in your WPS. तो टेक्निक में क्या है? आपको just like stringer bead, weaver bead, nozzle to walk this distance, all these things you can see, all these things you can see in your the QW410. So QW401 technique you can see all these details. And whatever in QW402 to 40410 variable must be included in your WPS. So now it is finished 402 to 410. Now just I have one summarized here. What is QW402 to what is 410? So QW402 is joints, QW403 is base metals, QW404 is filler metal, QW405 is position, QW406 is preheat, QW407 is PWHT,
QW408 is gas. QW409 is electrical characteristic, and QW410 is technique. So this is the requirement to make a, or to write a, or to prepare a WPS. So you understand, hope you understand from QW402 to 410. If you have still any query regarding the to write or make a WPS, so let me know. I will conclude to you. I will explain to you. Thanks a lot. See you soon in my next video. Thank you.